Hi everyone, and welcome back to the official channel of LegalEdge. Now, let's start with our session. I hope I'm perfectly audible and visible too, right? Chali. So let's start with our weekly roundup part 2 of the month of May, and यहाँ पर हम primarily आज दो topics को discuss करेंगे. ठीक है? Last week couple of topics came out of the Supreme Court of India only. One was related to the evolution and challenges. One was related to the evolution and challenges of the appointment of the members of the Election Commission of India. That's one thing. And another thing was about the legal boundaries of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe Prevention of Atrocities Act. SC/ST Act में एक offense को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक recent verdict दिया, wherein they clarified certain legal principles for constituting an offense under the SC/ST Prevention of Atrocities Act. तो ये दोनों टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलो. So let's start with the first topic, and the first topic which we have is about the issues related to the appointment of the Chief Election Commissioner and Election Commissioner of the Election Commission of India. ठीक है, अब क्यों ये टॉपिक वापस न्यूज में आया? ये why was it in news in the Supreme Court? That's primarily because, see, when you look at Article 324 of the Constitution of India, which talks about the establishment of the election commission, ठीक है, आर्टिकल 324 अपॉइंटमेंट को लेकर ये चीज क्लियर करता है that the appointment of the chief election commissioner and such other election commissioners will be done by the president subject to any law made by the parliament in that regard. ठीक है, the appointment shall be done by the president of India subject to any law made by the parliament in that regard. अब अपॉइंटमेंट को लेकर हमारी कंट्री में ना कोई पार्लियामेंट्री लॉ एग्जिस्ट नहीं करता था when it comes to the appointment of the chief election commissioner or the election commissioners of the election commission of India. There was no law which was created by the parliament. तो अपॉइंटमेंट होता किस तरीके से था? तो हिस्टोरिकली अगर हम देखें, ठीक है, हिस्टोरिकली अगर हम इस चीज को ऑब्जर्व करने के लिए जाएंगे ना, सो द अपॉइंटमेंट वाज प्राइमरली डन बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. और 1950 से ही ये चीज चली आ रही थी. द अपॉइंटमेंट इज एक्चुअली डन बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. होता क्या था कि लॉ मिनिस्टर एक पैनल ऑफ नेम्स सजेस्ट करते थे प्राइम मिनिस्टर को, एंड प्राइम मिनिस्टर उनमें से एक पर्सन को चूज करके प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर देते थे, एंड प्रेसिडेंट यूज्ड टू मेक द अपॉइंटमेंट ऑफ दैट पर्सन एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ आवर कंट्री. सारी चीजें ऐसे ही चली आ रही थी, बट टाइम एंड अगेन कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इंडिपेंडेंस को लेकर क्वेश्चंस होते रहते थे, बिकॉज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन आवर कंट्री. ठीक है, जस्ट लाइक द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट ना फॉर द पर्पसेस ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड अदर थिंग्स एज वेल, and therefore the constitution ensures that the Supreme Court of India remains independent independent from the executive or the legislative interference. At the same point of time, Election Commission of India actually acts as the watchdog of this democracy. It has been given the responsibility by the constitution to ensure that free and fair elections are conducted in the country. And therefore executive के रेंज में से, executive के डोमेन से उसको अलग रखना वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट था. बट अपॉइंटमेंट को लेकर अगर हम देखें ना, तो अपॉइंटमेंट वाज एक्चुअली फॉलोइंग अंडर द सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव ओनली. कौन पर्सन अपॉइंट होगा एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स, वो चीज यहीं से डिटरमाइन की जाती थी. और यही प्रोसेस 1950 से, ऐसा नहीं है कि करंट गवर्नमेंट ने इस प्रोसेस को क्रिएट किया था, यही प्रोसेस 1950 से ही कंटिन्यू होता चला आ रहा था. बट फिर बीच में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, विच वाज द फेमस अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट, in the case of Anup Baranwal,
versus Union of India. Supreme Court, by looking at the legislative vacuum which was present over there, okay, there was a legislative vacuum. Legislative vacuum का मतलब क्या है कि there was no parliamentary law which was created for the purposes of regulating or providing the procedure for the appointment of the chief election commissioners or the members of the election commission of India. उस legislative vacuum को fill करने के लिए the Supreme Court in its verdict came up with a 3-member committee. ठीक है, as an interim प्रोसीजर वी कैन से, ठीक है, कि जब तक पार्लियामेंट लॉ नहीं बनाती है, ठीक है, till the time parliament comes up with a law for the purposes of appointing or for the purposes of regulating the procedure of the appointment of the members of the election commission of India, the Supreme Court came up with the concept of a 3-member committee, and this 3-member committee included the prime minister, the leader of opposition or the leader of the largest opposition party holding the largest numerical strength in opposition in the house, and the Chief Justice of India. And this 3-member committee was supposed to make recommendation to the president. Okay? This 3-member committee was supposed to make recommendation of the names to the president. Recommendation of the name to the president to be appointed in the Election Commission of India. और इसी अनूप बरनवाल के केस के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इस कमेटी को फॉर्म किया? Because one interesting incident took place wherein a person was appointed as the member of the Election Commission of India, and the entire process was wrapped up in a single day only. Like from the selection of the name to the recommendation and subsequent appointment, everything was done in a single day only. So the Supreme Court kind of felt that perhaps there is too much of an interference, or there is too much of a discretion being given to the executive part of our government with respect to the appointment of the election commission or the election commissioners or the chief election commissioner. And therefore, Supreme Court came up with this 3-member committee. But this was an interim procedure. That is, till the time the parliament comes up with a law, this particular committee will make the recommendation. And subsequently, the parliament came up with an act in the year 2023. In 2023, parliament came up with an act, and this act changed the composition of the 3-member committee. This act of 2023 changed the composition of a 3-member committee. So CGI was replaced with a cabinet minister now. Prime Minister, a union cabinet minister, and the leader of opposition. So CGI was replaced with the union cabinet minister. And that is the primary reason that why this act is now being challenged in the Supreme Court of India. Okay? Because that CGI included committee was considered as a neutral committee for the purposes of appointment to such an important body. And what was the primary purpose for creation of that particular committee by the Supreme Court? The purpose was to ensure that there is minimal interference of the executive with respect to the working and the appointment of the members of the Election Commission of India. But when you look at the constitution of this committee, which was created by 2023 Act, again, executive is being given an absolute discretion over here, wherein 2 members will come out of the government or the ruling party, and 1 will include the leader of opposition. And that is the primary reason that why the 2023's Act constitutional validity is being challenged and is being discussed in the Supreme Court of our country. Okay? This was the primary reason that why it came into news. So, the constitutional basis is Article 324 Clause 2 specifies that the EC's appointments are subject to laws made by the Parliament.
The president will make the appointment, but that appointment is subject to the laws made by the parliament. And there was an act of 1991 which regulated the conditions of service and conduct of business of the Election Commission of India. There was an act which was existing since 1991. That act regulated salaries and tenure of the members of the Election Commission of India, but was silent on the actual appointment process. Okay? So, in the absence of this specific law, the Union Law Ministry and the Prime Minister effectively controlled the appointments, usually selecting from the bureaucracy only. क्योंकि कोई law नहीं था, there was no law regulating the appointment process. And therefore, the executive, that is the law ministry, Union Law Ministry, and the Prime Minister effectively controlled the entire appointment process. जहां पर senior bureaucrats को अपॉइंट कर दिया जाता था एज द मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. ठीक है. फिर आया अनूप बरनवाल का जजमेंट इन मार्च 2023. So the core principle which the Supreme Court laid down in this case was that EC is the guardian of the democracy and must be insulated from executive interference, and that is correct as well. If Election Commission of India is given the responsibility of conducting free and fair elections in the country, wherein time and again during every election cycle in our country, the credibility of the Election Commission of India is being discussed everywhere, that whether the ECI is working as an independent body or not. And therefore, Supreme Court stated that it is important to insulate the Election Commission of India from the executive interference. And therefore, they came up with an interim selection committee. So the Supreme Court mandated a 3-member panel until a law was enacted. And this included Prime Minister, Leader of Opposition or Leader of the largest opposition party, and the Chief Justice of India. And the Supreme Court in this case also recognized that the right to vote is a part of freedom of expression under Article 19(1)(a) of the Constitution of India. Okay? And then came the 2023 Act, wherein the appointment mechanism was changed, and this Act, the Parliament enacted the Chief Election Commissioners and Other Election Commissioners Act of 2023, and the key change was the Act removed the CGI from the selection panel, replacing them with a Union Cabinet Minister nominated by the Prime Minister. Okay? So they created Prime Minister, Cabinet Minister, and the Leader of Opposition. So the CGI was replaced from this body, and this gives the executive 2 out of 3 seats on the selection committee. And that is the primary reason, because if the main reason of the Anup Baranwal judgment was to ensure insulation of the Election Commission of India from the executive interference, again executive was being given a supreme power with respect to the appointment. And that is the primary reason that why it is being challenged over there. But at the same point of time, another matter of concern with this Act of 2023 was the discretionary power of this selection panel. So Section 8 Clause 2 allows the selection committee to bypass the search committee's shortlist and consider any other person. होता क्या है कि a shortlisting committee was or a search committee is also created under this act. ठीक है? वो search committee नाम को recommend करेगी, एक panel of names को recommend करेगी. उसमें से फिर selection committee select करके appointment के लिए president को recommendation भेजेंगे. But the selection committee is also given the power or the discretion to bypass the recommendations of this search committee as well. And जरूरी नहीं है वो search committee में ही से किसी person को select करें. They can select any other person as well. And these two reasons become the primary ground on which ADR, that is Association for Democratic Reforms, an NGO in our country, challenged the constitutional validity of this act. ठीक है? तो petitioner के argument है क्या इस case के अंदर? NGOs like ADR argue that the new law restores the executive dominance and defeats the purpose of Anup Baranwal ruling. And देखो सुप्रीम कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने ये भी ऑब्जर्व किया है कि भाई उस अनूप बरनवाल जजमेंट में ये कहा गया था कि पार्लियामेंट लॉ बनाएगा फॉर द पर्पसेस ऑफ अपॉइंटमेंट. ये नहीं बताया गया था कि पार्लियामेंट लॉ कैसे बनाएगा. तो वो पार्लियामेंट की मर्जी है. एंड इफ दे वांट टू ओवरटर्न द रूलिंग ऑफ द अनूप बरनवाल जजमेंट दे कैन डू इट. बट द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो आस्क्ड कि भाई पार्लियामेंट में इस चीज को लेकर प्रॉपर डिस्कशंस हुए या नहीं हुए.
तो चैलेंजेस में ये भी हाईलाइट किया गया दैट द लॉ वाज पास्ड विद मिनिमम पार्लियामेंट्री डिबेट एज मेनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स वर सस्पेंडेड एट दैट टाइम। एंड इसी वजह से जस्टिस दीपंकर दत्ता ने एक बड़ा ही अच्छा सा ऑब्जर्वेशन दिया वहां पे। ही यूज्ड दिस फ्रेज दैट इज द टायरनी ऑफ द इलेक्टेड, that is executive controls over the process, contrasting it with the phrase of tyranny of the unelected, sometime applied to the judiciary. कि जुडिशरी अनइलेक्टेड मेंबर्स के थ्रू चलती है तो उसकी टायरनी को लेकर बहुत डिस्कशन होता है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जस्टिस दीपंकर दत्ता ने यहाँ पे उस चीज को कॉन्ट्रास्ट किया विद द टायरनी ऑफ द इलेक्टेड एज वेल। बट अभी कोई जजमेंट नहीं आया, लेट्स से कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज पे क्या जजमेंट देता है, ठीक है। बट क्या इस तरीके की 3 मेंबर कमिटीज हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करती हैं? तो हाँ, एग्जिस्ट तो करती है। सीबीआई का डायरेक्टर ऐसे ही 3 मेंबर कमिटी के रिकमेंडेशन पे डिसाइड होता है, बट उसमें सीजीआई पार्ट होते हैं, उसमें यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर पार्ट नहीं होते। तो जब सीबीआई जैसी इंपॉर्टेंट एजेंसी, ठीक है, विच इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट लाइक द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जब उसके रिकमेंडेशन पैनल में सीजीआई इन्वॉल्व है टू एंश्योर द न्यूट्रलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन, then perhaps it is important that ECI should be insulated from the executive's interference. But that is all about this topic कि क्यों ये पूरा का पूरा टॉपिक वापस न्यूज में था, ठीक है। चल, so now let's look at the second topic, and the second topic is related to the scheduled caste and scheduled tribe prevention of atrocities act, ठीक है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक रीसेंट जजमेंट पास किया है। लेट्स अंडरस्टैंड कि इस चीज का कॉन्टेक्स्ट है क्या। देखो, SC/ST एक्ट एग्जिस्ट क्यों करता है? दैट इज बिकॉज ऑफ आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 17 पुट्स अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इनटू एग्जिस्टेंस, है ना। इट सेज दैट द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड, एंड इट आल्सो सेज दैट एनी डिसेबिलिटी arising out of practice of untouchability shall be an offense punishable in accordance with law, ठीक है। आर्टिकल 17 एक्चुअली पुट्स और एक्चुअली इंपोजेस एन अबॉलिशन ऑन द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी का ही वो पार्ट है। और उसमें ये भी चीज दी गई हुई है कि एनी डिसेबिलिटी विच इज अराइजिंग आउट ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। तो आर्टिकल 17 के प्रोविजंस को एनफोर्समेंट देने के लिए, अप्लाई करने के लिए जिस लॉ को बनाया गया, दैट लॉ इज द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज एक्ट 1989, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज एक्ट 1989। अब ये चीज हमेशा याद रखना दैट ऑफेंडर अंडर दिस एक्ट विल बी अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है। ऑफेंडर और द अक्यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर एक्ट will always be a person who is not a member of the scheduled caste or scheduled tribe, ठीक है। और वहां पर n number of acts को मेंशन किया गया which will be considered as an offense, ठीक। उसमें से एक ऑफेंस है wherein a person humiliates or uses caste based slurs or names अगेंस्ट अ मेंबर ऑफ द SC/ST कम्युनिटी। अगर कोई भी पर्सन किसी SC/ST कम्युनिटी को ह्यूमिलिएट करता है या उसके अगेंस्ट कास्ट बेस्ड स्लर्स को यूज करता है, ठीक है, टू टारगेट अ मेंबर ऑफ द SC/ST कम्युनिटी, दैट इज एन ऑफेंस, बट ओनली व्हेन द ह्यूमिलिएशन और दोस कास्ट बेस्ड स्लर्स आर डन इन अ पब्लिक व्यू, ठीक है, when it is being done in a public view।
अब पॉइंट वही था इस केस के अंदर। इस केस में हुआ क्या कि एक घर में, ठीक है, अक्यूज्ड कास्ट बेस्ड स्लर्स यूज कर रहा था टू ह्यूमिलेट अ मेंबर ऑफ द एससी एसटी कम्युनिटी, बट घर के अंदर, चार दीवारी के अंदर। उसके ऊपर सेक्शन 3 के अंडर ऑफेंस चार्ज कर दिया गया। बट द सुप्रीम कोर्ट मेड इट क्लियर कि जब ये एक्ट, व्हेन इट इज टेकिंग प्लेस विद इन द कन्फाइंस ऑफ द फोर वॉल्स ऑफ द हाउस, इट इज नॉट बीइंग डन इन अ पब्लिक व्यू। पब्लिक व्यू मतलब ऐसी कोई चीज या ऐसी कोई जगह वेयर द सेड एक्ट इज टेकिंग प्लेस अंडर द पब्लिक गेज। जब ऐसी कोई चीज लोगों की नजरों के सामने हो रही है, या एक घर को भी पब्लिक व्यू या पब्लिक प्लेस माना जा सकता है, प्रोवाइडेड बाकी लोगों को ये दिख पाए कि वहां पर क्या हो रहा है। बट अगर ये कास्ट बेस्ड स्लर्स, ठीक है, कास्टिस्ट कमेंट्स अगर एक घर की चार दीवारी के अंदर किए गए, so that is not fulfilling the requirement of a public view, and therefore the offender cannot be booked under the section 3 of this act. This was the entire judgment over it. ठीक है, so allegations थे क्या? The allegations were that the accused individuals were charged with hurling casteist slurs and intimidation against the scheduled caste complainant and his wife. ठीक है, अब हो कहां रहा था ये इंसिडेंट? The incident occurred inside the four walls of a residential house during an attempt to break a door lock. एक घर का दरवाजा तोड़ते टाइम घर के अंदर ही ये सारी चीजें हो रही थी, जहां पर कास्टिस्ट स्लर्स बेसिकली हर्ल किए गए थे टुवर्ड्स द कंप्लेनेंट एंड हिज वाइफ। एंड जिन चार्जेस के अंदर यहां पर फिर अक्यूज को बुक किया गया, द अक्यूज वर बुक अंडर सेक्शन 31R एंड सेक्शन 31S ऑफ द SC ST एक्ट। लेट्स सी कि ये दोनों ऑफेंसेस हैं क्या। ठीक है, so section 3 basically talks about punishment for offenses of atrocity. ठीक है, so it says whoever not being a member of the scheduled caste or scheduled tribe, ठीक है, इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि ऑफेंडर या अक्यूज्ड SC ST एक्ट में हमेशा एक ऐसा कोई पर्सन होगा who is not a member of the scheduled caste or scheduled tribe. ठीक है, so whoever not being a member of the scheduled caste or scheduled tribe intentionally insults or intimidates with the intent to humiliate a member of the scheduled caste or a scheduled tribe in any place within public view. Similarly, anyone who is not a member of a scheduled caste or scheduled tribe abuses any member of a scheduled caste or scheduled tribe by caste names in any place which is within a public view shall be punished under this section. बट पब्लिक व्यू की यहां पर मेन रिक्वायरमेंट है। नाउ व्हाट इज पब्लिक व्यू? सो एसेंशियल इंग्रेडिएंट इज टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 31R and 31S, द एक्ट मस्ट टेक प्लेस विद इन पब्लिक व्यू। नाउ व्हाट इज पब्लिक व्यू? सो इट मस्ट बी अ काइंड ऑफ अ प्लेस विद इन द पब्लिक गेज, जहां पर लोगों की नजरें हो, जहां पर लोगों को दिख रहा हो कि क्या हो रहा है। ठीक है, सो इवन इफ अ प्लेस इज टेक्निकली प्राइवेट, इट ओनली क्वालिफाइज इफ द पब्लिक आई has access to notice what is happening there. बट अगर घर की चार दीवारी के अंदर ये एक्ट हो रहा हो तो क्या लोगों को दिखेगा? Is that act taking place within the public gaze only? Answer would be no in that situation, right? Therefore, the Supreme Court's ruling is that the FIR revealed that the abuse happened inside a private residence, not a location exposed to the public. ठीक है? And therefore, the legal conclusion was that a residential house, when not exposed to the public eye, does not satisfy the public view requirement of the act, and the result was the Supreme Court quashed the proceedings as the essential ingredients of the offense was missing. तो बहुत सारे offenses, ठीक है, किसी पर्सन को ह्यूमिलिएट करना who is a member of the SC ST community, ठीक है, या कास्टिस्ट नेम उसके अगेंस्ट यूज करना, ये सारी चीज ऑफेंस में तभी आ पाएंगी, ये अब्यूज या ह्यूमिलिएशन ऑफेंस में तभी फॉल करेगा when it takes place in a place within the public view. And if the public is not having any access to that, then the same cannot be considered as an offense under the SC ST Act. ठीक है, चलिए, so these were the important topic. One was about the appointment of the members of the Election Commission of India, the law which is being challenged in the Supreme Court, and the other one was the Supreme Court on the SC ST Prevention of Atrocities Act 1989. ठीक है, so the CLAT 2026 toppers tour is on full mode now. ठीक है, जोधपुर, जयपुर, इंदौर, पटना, नोएडा, रांची, चंडीगढ़, नवी मुंबई, गुरुग्राम, सेंट्रल दिल्ली, these are the places and some more will come up in the future. Limited seats हैं,
So do register now so that you can have a conversation with the toppers of your CLAT 2026 while being in the same room as well. Understand कि उन्होंने क्या problems face की थी, understand how they handled those position, and the same and similarly how did they manage the fear of cracking the examination and along with other issues as well. ठीक है, तो रजिस्टर करना ना भूलें, लिमिटेड सीट है, रजिस्ट्रेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी अलॉन्ग विद द चैट बॉक्स एज वेल. ठीक, बाकी आज के सेशन के लिए इतना ही. आई होप द टॉपिक्स आर क्लियर, समझ में आया हो तो डू लाइक द सेशन एज वेल, एंड इफ यू हैव एनी अदर रिक्वायरमेंट यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. विल बी हैप्पी टू हेल्प. नाउ जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंजॉय योर डे, एंड आई सी यू सून गाइस. ऑलराइट, thank you so much everyone, thank you so much guys, thank you so much, thank you.